Good morning, students. Today we shall start with the next chapter, Human Settlements, Chapter 4. Human settlements means a cluster of dwellings. They may be of any type or size where human beings live. For this purpose, people may erect houses and other structures and command some area or territory as their economic support base. So, what are human settlements? It just means cluster of dwellings. जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों के घर, वो कोई भी तरह के हो सकते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कोई भी साइज के हो सकते हैं, लेकिन वहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वहाँ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं, वो उनका इकोनॉमिक सपोर्ट बेस है वो जगह. Thus, the process of settlement inherently involves grouping of people and apportioning of territory as their resource base. What is apportioning? Apportioning means divide up and share. So that territory is being shared amongst the people and it forms their resource base. Settlements may vary in size and shape. They range from a hamlet to metropolitan cities. Okay, with size, the economic character and social structure of settlements change, and so do its ecology and technology. तो साइज के साथ वहाँ का इकोनॉमिक कैरेक्टर, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो भी चेंज होती है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. जब सेटलमेंट्स छोटे होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, तो वो रूरल सेटलमेंट्स हो जाते हैं. लेकिन जब बड़े बड़े जहाँ पे एरियाज़ हैं, जहाँ बड़े बड़े हाउसेस हैं, जहाँ की इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा. Settlements could be small and sparsely spaced. They may also be large and closely spaced. The sparsely located small settlements are called villages, specializing in agriculture or other primary activities. तो settlements दो तरह के होते हैं, रूरल एंड अर्बन. रूरल सेटलमेंट्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे घर होते हैं, दूर दूर बने होते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ फॉलो होती हैं. ऑन द अदर हैंड देर आर फ्यूअर बट लार्जर सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स. नाउ these specialize in secondary and tertiary activities. The basic difference between rural and urban settlement is as follows. जो basic difference है दोनों में वो ये है. The rural settlements derive their life support or basic economic needs from land-based primary economic activities, whereas urban settlements, they depend on processing of raw materials and manufacturing of finished goods on the one hand and a variety of services on the other hand. तो difference समझ में आया? पहला difference, rural settlements, they follow primary economic activities, whereas urban settlements, they depend upon processing of raw materials, manufacturing of finished goods. So their secondary and tertiary activities are more prevalent. Now cities, they act as nodes of economic growth. They provide goods and services not only to urban dwellers but also to the people of rural settlements in the hinterlands in return for food and raw materials. जो cities हैं, they become the center of economic growth and they provide goods and services to the people. And they provide services not only to the urban people but also to the nearby rural settlements जो उनके hinterlands में उनके आसपास होते हैं, और वो लोग इनको फूड और मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. उसके बदले में अर्बन सेटलमेंट्स उनको देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स हियर. क्यों? क्योंकि जब वो रॉ मटेरियल्स और फूड्स प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी डेवलप हो जाता है. उन लोगों को भी काम मिलता है रूरल सेटलमेंट में जो रहते हैं, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं. तो रूरल, okay, then third is rural and urban settlements differ in terms of social relationship, attitude and outlook. Rural people are less mobile and therefore social relations among them are intimate.
तो रूरल एरियाज़ की जो पीपल हैं, इन लोगों की सोशल रिलेशनशिप भी डिफरेंट होती है. वो लोग क्या बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, वो बहुत कम, बस वहाँ से अपने विलेज से गए टाउन तक गए, टाउन में सामान बेचा, वापस विलेज में आ गए. तो कम लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है उनका, उनकी इंटीमेसी ज़्यादा होती है. Whereas in urban areas, on the other hand, way of life is complex and fast, and social relations are very formal. Types of rural settlements. Types of settlements are determined by the extent of built up area and inter-house distance. In India, compact or clustered village of a few hundred houses is a rather universal feature, particularly in the northern plains. However, there are several areas which have other forms of rural settlements. There are various factors and conditions responsible for having different types of rural settlements in India. These include physical features, nature of terrain, altitude, climate, and availability of water. Second, cultural and ethnic factors, social structure, caste, and religion. Third, security factors, defense against thefts and robberies. Rural settlements in India can broadly be put into four types. So, here we are talking about rural settlements. You see, students, various factors are responsible for the type of rural settlements. The first is physical features, second is ethnic and cultural factors, and third is security factors. So all these factors play an important role in the type of rural settlement. Physical features, naturally they affect whether the area is mountainous or whether it is plain area, what is the altitude of that particular area, what is the availability of water, whether water is available or not, because we've seen since ancient times settlements have developed around areas where water was available. In the same way, ethnic and cultural factors also play an important role in the development of these rural settlements, because such as tribal, caste, community identity, they also play an important role. And then ethnic, social, cultural factors, in this case what happens, actually the settlement, it develops around a one family who's the landowner. Then various small settlements will develop around that landowner. They will work for him. Then in the outer periphery area, there will be development of Harijans. So in this way, these settlements develop. Then security factor, again, it plays a very important role, because settlements, they are always, these rural settlements, they are always afraid of robbery and thefts. So usually they get compact. They build their houses close together so that they can be safe. So security factor is another important factor of consideration when they built up these rural settlements. Now these rural settlements in India, they are broadly of four types. First is clustered, agglomerated or nucleated. Second is semi-clustered or fragmented. Third, hamleted. And fourth, dispersed or isolated. So first let's do the clustered settlements. The clustered rural settlements is a compact or closely built up area of houses. In this type of village, the general living area is distinct and separated from the surrounding farms, barns and pastures. The closely built up area and its intervening streets represent some recognizable pattern of geometric shape, such as rectangular, radial, linear, etc. Such settlements are generally found in fertile alluvial plains and in the northeastern states. Sometimes people live in compact village for security or defense reasons, such as in Bundelkhand region of central India and in Nagaland. In Rajasthan, scarcity of water has necessitated compact settlement for maximum utilization of available water resources. तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स कौन से हुए? जहाँ पे बहुत सारे हाउसेस क्लोजली बिल्टअप होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है कि घर तो इनके पास पास बने होते हैं और चारों ओर इनके खेत होते हैं. ओके, दीज क्लोजली बिल्टअप एरियाज
उनके कई कारण भी हो सकते हैं, मे बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मे बी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये सब लोग पास पास रहते हैं, इनका शेप में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेडियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, और चारों ओर इनके फिर फर्टाइल एलुवियल प्लेन, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन स्टेट्स में इसी तरह होते हैं, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स होते हैं, वहाँ पास पास ये सेटलमेंट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट विलेज में रहते हैं। बुंदेलखंड में ये मेन रीजन है, बुंदेलखंड in central India and in Nagaland. This security or defense purpose, they built compact villages. और राजस्थान में because of scarcity of water, उसकी वजह से ये लोग एक साथ होकर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड or fragmented settlements may result from tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement. More often, such a pattern may also result from segregation or fragmentation of a large compact village. In this case, one or more sections of the village society choose or is forced to live a little away from the main cluster or village. In such cases, generally, the land owning and dominant community occupies the central part of the main village, whereas the people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks of the village. Such settlements are widespread in the Gujarat plain and some parts of Rajasthan. It is clear that semi-clustered settlements may develop for two reasons. One is clustering in a restricted area. कोई एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बस यहीं पे ही सेटलमेंट्स बन सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट, कि वहाँ डिस्पर्स्ड है सेटलमेंट लेकिन कोई पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। या फिर एक दूसरा रीज़न होता है कि दे में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन, कि एक बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट विलेज है लेकिन कुछ एरिया सेग्रीगेट कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं कि यहाँ पे ये ही लोग रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ लैंड ओनर्स या जो रिचर पीपल होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन उस एरिया का, उस विलेज का कर देंगे कि यहाँ पे वो लोग ही रह सकते हैं। फिर उसके थोड़ी दूरी पे बाहर बाहर छोटे मोटे वो जो मीनियल वर्कर्स होते हैं उनके, या जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी होते हैं उनके लिए घर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सेमी क्लस्टर्ड हो जाएगा कि एक एरिया उनके लिए फिक्स हो गया, बाकी एरिया में वो लोग रह रहे हैं। और इस तरह के सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, दे आर वेरी कॉमन इन Gujarat plains and some parts of Rajasthan. The next is hamleted settlements. What are hamlets? Hamlets are basically small villages. So some settlements is fragmented into several units physically separated from each other, bearing a common name. तो कई बार नाम कॉमन होता है, एक ही होता है विलेज, लेकिन उसके सेटलमेंट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे बने होते हैं। These units are locally called Panna, Pwera, Pali, Nagla, Dhani, etc. in various parts of the country. This segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factors. So, social factors play an important role in the development of these hamlets. Such villages are more frequently found in the middle and lower Ganga plains, Chhattisgarh, and lower valleys of the Himalayas. सो हैमलेटेड सेटलमेंट समझ में आया कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड सेवरल यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे से फिजिकली थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, दो दे में बी हैविंग अ कॉमन नेम, और लोकली इनके बहुत सारे नाम हैं, पन्ना, पारा, पाली, नगला, ढानी बोलते ना। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये अलग अलग थोड़े से जगह जगह डेवलप हो जाते हैं, and they are motivated actually maybe by social factors, maybe by caste factors or ethnic factors, same language, same religion, that plays an important role in the development of these hamleted settlements, and they are common in lower Ganges plain and Chhattisgarh and lower valleys of Himalayas. Next is dispersed settlements. Dispersed or isolated settlement pattern in India appears in the form of isolated huts or hamlets, of few huts in remote jungles or on small hills
with farms or pastures on the slopes. Extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented nature of the terrain and land resource base of habitable areas. Many areas of Meghalaya, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Kerala have this type of settlements. Dispersed or isolated settlements are also called scattered or sprinkled settlements. इन settlements में क्या होता है, जो hamlets होते हैं they are scattered. कोई specific plan नहीं होता इन hamlets का, और generally ये settlements क्या होते हैं कि they are found in the form of isolated huts. Isolated huts बने होते हैं remote jungles में और या small hills पे with farms or pastures all around them on the slopes. तो ये इस तरीके से बने होते हैं. एंड एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ दीज सेटलमेंट्स इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द लैंड रिसोर्सेज. जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि इनका बड़े फ्रेगमेंटेड नेचर में ये बने होते हैं हैमलेट्स. नेक्स्ट इज अर्बन सेटलमेंट्स. Unlike rural settlements, urban settlements are generally compact and larger in size. They are engaged in a variety of non-agricultural, economic and administrative functions. है ना. तो जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ आर डोमिनेंट. As mentioned earlier, cities are functionally linked to rural areas around them. Thus, exchange of goods and services is performed, sometimes directly and sometimes through a series of market towns and cities. Thus, cities are connected directly as well as indirectly with the villages and also with each other. आपको समझ में आया? जो urban settlements होते हैं, they are compact and they are bigger in size. And the main thing is that there's a continuous interaction between the towns, between the urban centers and the villages that are surrounding them. They are exchanging goods and services from each other. And the surrounding rural area, which is served by the town, and at the same time it serves the town, that is called its hinterland. So there's a continuous interaction of goods and services between the towns and its hinterland, that is the rural area surrounding them. So इस तरीके से बराबर connected रहते हैं each other से, either by transport and business. This whole range of cities and towns, they act as functional nodes or centers of large geographical scheme of cities, towns, villages, and the resource for territorial and functional organization of the whole country. अब what is the definition? How will you define these towns? तो इसको जो सेंसस ऑफ इंडिया है उन्होंने अर्बन सेटलमेंट्स को डिफाइन किया था 1951 में, और ये डेफिनेशन अभी तक हम उसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं. 2001 तक उस डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. उन्होंने रिकग्नाइज किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया टू टाइप्स ऑफ टाउन्स. वन इज स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड सेकंड इज सेंसस टाउन्स. स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होते हैं? All places which have a municipal corporation, cantonment area or a notified town area committee, उसको टाउन की कैटेगरी दी हुई है, स्टैट्यूटरी टाउन्स कहा गया है. सेंसस टाउन्स कौन से होंगे? ऑल अदर प्लेसेस विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरियाज है? फर्स्ट इज a minimum population of 500 persons. 5,000, sorry, not 500, 5,000 persons. Second is at least 75% of male working population engaged in non-agricultural pursuits. 75% people non-agricultural काम करना चाहिए उन्हें. Third is a density of population of at least 400 persons per square kilometer. जो वहाँ डेंसिटी होगी पॉपुलेशन को एटलीस्ट 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर है. और इसको टाउन की डेफिनेशन को हमारी जो दूसरी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ टाउन्स और वो, तो आप वहाँ भी उसको रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया. टाउन्स फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया. Even at the time of Indus Valley civilization, towns like Harappa
and Mohenjo-daro were in existence. The following period has witnessed evolution of towns. It continued with the periodic ups and downs until the arrival of Europeans in India in the 18th century. On the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified as, तो डिफरेंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक टाइम से हम टाउन्स को देखते हैं, लेकिन इन टाउन्स का फॉर्म with as the time passed on, the form of these towns changed. On the basis of this, we can categorize these towns in different forms. First were the ancient towns, then came the medieval towns, and now the modern towns. So first let us study ancient towns. There are a number of towns in India having historical background spanning over 2000 years. Most of them developed as religious and cultural centers. तो जो पुराने टाउन्स है ज़्यादातर वो 200 years के पहले से हैं और ये ज़्यादातर दे डेवलप्ड एज रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स. जैसे वाराणसी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स अमंग्स दीज. Prayag in Allahabad, Patliputra in Patna. Then Madurai are some other examples of ancient towns in the country. Then came the medieval towns. About 100 of the existing towns have their roots in the medieval period. Most of them developed as headquarters of principalities and kingdoms. These are fort towns which came up on the ruins of ancient towns. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur. तो बहुत सारे मिडिवल टाउन्स भी डेवलप हुए और ये ज़्यादातर दे डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स. हेडक्वार्टर्स बन गए जो चारों और उनका किंगडम था उसका. इनमें से कुछ फोर्ट टाउन्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट जो दूसरे टाउन्स हैं वो हैं दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, Agra and Nagpur. Then came the modern towns. The British and other Europeans have developed a number of towns in India, starting their foothold on coastal locations. They first developed some trading ports such as Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. The British later consolidated their hold around three principal nodes: Mumbai, Chennai and Kolkata, and built them in the British style, rapidly extending their domination either directly or through control over the princely states. They established their administrative centers, hill towns as summer resorts, and added a new civil, administrative and military areas to them. Towns based on modern industries also evolved after 1850. Jamshedpur can be cited as an example. तो ब्रिटिशर्स ने समझ में आया ना कैसे डेवलप किए. जो कोस्टल लोकेशंस पे टाउन्स थे उनको उन्होंने अपने मेन ट्रेडिंग पोर्ट्स बना लिया और फिर जो प्रिंसिपल जो सेंटर्स थे जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको ब्रिटिश स्टाइल में इन्होंने डेवलप किया. और फिर इन्होंने क्या करा कि जो कुछ टाउन्स जो हिल्स वगैरह पे थे उनको हिल रिसॉर्ट्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज डेवलप कर दिए. कुछ टाउन्स इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनवा दी इन 1850s के अराउंड, जैसे कि जमशेदपुर कैन बी साइटेड एज द बेस्ट एग्जाम्पल. नो आफ्टर इंडिपेंडेंस अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स. फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर एक्सेट्रा. तो ये इंडिपेंडेंस के बाद में जो डेवलप हुए उन टाउन्स का है. एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप हुए जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी एक्सेट्रा. सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट्स टाउन अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम अराउंड दिल्ली. With increasing investment in rural areas and a large number of medium and small towns have also developed all over the country.